तो पिला माने आमे पढ़ुतले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्लास 4 लास्ट क्लास रे पढ़ुतले मन पकाओ आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोलिटी इफेक्ट आउ सही इक्वेशन को यूज करी आमे एच खोलितले माने प्लांक्स कांस्टेंट आउ वर्क फंक्शन खोलतले ओके आज टिके थियोरेटिकल एक्सपेक्ट अछि व्हाट इज फोटो सेल क्वेश्चन इज दैट what is photocell or photoelectric cell एका कथा photocell जोटा photoelectric cell सेटा what is this simply it is an arrangement which converts light energy into electrical energy. It is an arrangement which converts light energy into electrical energy. That is photocell, or we can say photoelectric cell. It works जे कौन सी गोटे डिवाइस रो गोटे प्रिंसिपल थाए पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर से काम करे ट्रांसफॉर्मर हो जनरेटर हो समस्त गोटे पर्सनल प्रिंसिपल थाए सही प्रिंसिपल पर से बेस होता है ठीक सेमती ए फोटोसेल कहा पर काम करे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो मीन्स लाइट इलेक्ट्रिक emission. It works on the principle of photoelectric emission. Okay. Next, हम पढ़िवा गोटे क्वेश्चन निभौची types of photocells. Types of photocells. What are the types of photocells? Basically three types. First photo emissive cell, photoconductive cell, photovoltaic cell. Photoemissive, photoconductive और photovoltaic. ता भीतर आमे कोडा पढ़िबा photoemissive cell. Okay. नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन अच्छी पढ़िबा describe construction and working of a photocell. Describe the construction and working of a photocell.
गोटे इभाकुएटेड ट्यूब ग्लास ट्यूब एटा कैथोड एटा एनोड हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन या इंसिडेंट होची मन पकाओ लास्ट क्लास करते हाई टेंशन बैटरी ये जो अरेंजमेंट को कहा जाए हाई टेंशन बैटरी और इट्स ए पोटेंशियोमीटर पैरेलली कनेक्ट है वोल्टमीटर सीरीज रे अच्छे एमीटर स्मॉल करंट मापुची तेना यूनिट नहीं माइक्रो एम्पियर दिस इज द कंस्ट्रक्शन ओके दैट मीन्स हियर वी कैन से it consists of an evacuated glass tube. It consists of an evacuated glass tube which encloses two electrodes, cathode and anode. Cathode and anode. Next point, cathode जेटा एमिटर सेटा एटा पैराबोलिक शेप है ए बळे शेप पैराबोलिक शेप ए शेपटा काहेकि जति भी लाइट पड़ो से सब फोकस हो फोकसिंग हो जहाँपर कि से अधिका इंटेंसिटी क्रिएट हो पार द कैथोड और एमीटर इज ए parabolic metal plate. The cathode or emitter is a parabolic metal plate coated with cesium oxide. Cesium oxide it's alkali metal. मन पकाओ एको कहीं कोटिंग कराला तार वर्क फंक्शन कमी जीवो आमे कैथोड को सब कौन करने चाहिए आम इंटेंशन है वी ट्राई टू मेक इट फोटो सेंसिटिव ये केते इजीली लाइट को सेंसिटिव हो पार माने लाइट पड़ने ये इलेक्ट्रॉन एमिट करदेव तो ऑटोमेटिकली वर्क फंक्शन कमेवा दरकार से कोटिंग दिया सेजियम ऑक्साइड रो एंड आउट रहा यहाँ 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 कौन ना द एनोड is a thin rod of platinum or nickel. एनोडटा गोटे थिन रड टा जोटा कि प्लाटिनम बा निकेल रो तैयारी ओके एटा कंस्ट्रक्शन दैट्स ऑल क्लियर गोटे इभाकुएटेड ग्लास ट्यूब दा भीतर दुटा इलेक्ट्रोड अच्छी गोटे कैथोड गोटे एनोड यार कैथोड इज ए पैराबोलिक मेटल प्लेट पैराबोलिक शेप होइतिबो मेटल प्लेट कोटेड विथ द सेजियम ऑक्साइड या पटे कोटिंग दिया हिची कोन करिया पई ना यार वर्क फंक्शन को कमेया पई और बेसिकली एनोड टा किए ना गोटे थिन रॉड मेड अप ऑफ योर निकेल और प्लाटिनम एंड द टू इलेक्ट्रोड्स
this cathode and anode, two electrodes are connected externally to a potentiometer arrangement. निभाउची the two electrodes are connected externally to a potentiometer arrangement. जो दुटा इलेक्ट्रोड रहा ताको एक्सटर्नली हमें कहा तार कनेक्शन करछे नोड पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट जहां अंतर हम कोन करबा ना एनोड रो पोटेंशियल को इच्छा अनुसार चेंज करि पारिबा. नेक्स्ट दिस इज द कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? काम कोन होची ना काम या होची व्हेन HF radiations, high frequency radiations, are incident on cathode. When high frequency radiations are incident on cathode, the free electrons emitted, so called photoelectrons, consequently collected by anode. जो इलेक्ट्रॉन एटू बाहरला ताको संगे संगे कलेक्ट किए करियो एनोड. हला व्हेन द HF रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन कैथोड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाहर जानते एटू सेटा को फोटो इलेक्ट्रॉन कॉन्सिक्वेंटली कलेक्टेड बाय एनोड. से संगे संगे एनोड द्वारा कलेक्ट हो जाती. ओके व्हिच constitute the current in the circuit called photoelectric current. This is the function. Function टा है जेतले लाइट पड़िला हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन एटो इलेक्ट्रॉन बाहरला ताको हमें फोटो इलेक्ट्रॉन कहू और जो इलेक्ट्रॉन बाहरला ताको कलेक्ट किए कला एनोड कला एवं जहाँ पड़ कि सर्किट रे गोटे करंट एस्टाब्लिश हो गला जाको हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोली कहू. दिस इज ऑल अबाउट फोटो सेल. जो 3 मार्क्स रे आसे शॉर्ट नोट बा बड़े बड़े 2 मार्क्स रे आस जाए. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ फोटो सेल? Uses of cell. In fire alarm कंपनी रे बा कोडी निया ना गला सायरन बाजिबो. फायर अलार्म
बर्गलर अलार्म, रबरी डकैती फकैती हेले बैंक रे साइरन बाजिबो, इन ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, बड़ बड़ सहर मान स्ट्रीट लाइट आपे जले आपे बंद हो जाए, ऑटोमेटिक स्विचिंग रे फोटो सेल लगे, कैलकुलेटर लगे, बड़ काउंटिंग डिवाइस सब जो बड़ बड़ एयरपोर्ट बा स्टेशन सब लाइट था डिवाइस गले सब काउंट हुए केते जन गले बा डिटेक्टर से लगे, किसी कैलकुलेटर देखियो खरा रे पकेले चार्ज हे तापर चले फोटो सेल लगे। ओके, इन काउंटिंग डिवाइस साउंड रिप्रोडक्शन रे यूज हुए, इन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड एटसेट्रा। इन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, these are the uses of photocell. So photocell किए ना basically it's an arrangement which convert light to electric, light energy into electrical energy. तार कंस्ट्रक्शन पढ़ेले केमती होता है, वर्किंग पढ़ेले, यूजेस पढ़ेले। ओके, यहाँ पर शॉर्ट नोट है, बड़ा पचार दिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ फोटोसेल, दी मार्क पचार दबो। नेक्स्ट पढ़िबा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एक्सप्लेन ये बहुत एक कथा मुझे आगुरी भी कही एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेला बेले डुअल नेचर विषय कही टिल देन एठी भी कहूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ radiation. In this case radiation means light. एटे में रेडिएशन कहा को बुझिबा, लाइट को बुझे डुअल नेचर। देखा गला लाइट रो किछि फेनोमेना अछि जरा कि एक्सप्लेन हे परिबा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, आउ किछि फेनोमेना अछि जाको में एक्सप्लेन करि परिबा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। कि नेचर? दैट्स व्हाई वी कैन से लाइट रो डुअल नेचर अछि। याको केमते में देखेबा, some phenomena like interference, diffraction and polarization, जेटा कि ऑप्टिक्स रे पढ़िया परे वेव ऑप्टिक्स रे पढ़िया। ओके, some phenomena like interference, diffraction and polarization can be explained on the basis of wave nature of light. किसी घटना अच्छी जेटा को केमिति बुझिबा ना, लाइट को जब गोटे वेव वे रे डील करिबा, वेव हिसाब से डील करिबा तो एटा को बुझी हेबो। आ एटा को छानियावर नहीं, सब ऑप्टिक्स रे ही पढ़ा जीवो, वेव ऑप्टिक्स रे। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन देन पड़छ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सेमति अछि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। बट ए जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब को बेसिस रे बुझा जीवो, वेव नेचर ऑफ लाइट। सेमति आउ किछि घटना अछि जेटा कि वर्तमान में पढ़ौछे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊ आम कही मन पकाओ लाइट टाक आम पैकेट पैकेट फॉर्म नहीं, वेव नेचर नहीं नथिले, लाइट टाक आम एनर्जी ऊपर धरते एंड कही इट नेवर ट्रैवल इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, डिसकंटिन्यूअसली मूव करे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, ईच पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। तो एठी जो फोटो इलेक्ट्रिक होची, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो लाइट जो
बट लाइट रो वेव नेचर जो होउछ ना पार्टिकल नेचर जो होउछ पार्टिकल नेचर तो एबले किछि अछि some phenomena like photoelectric effect and Compton effect पर पढ़ा यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक तो आम पढ़ीचे कंप्यूटर लेटर में पढ़ा युड़ाक कौ बेसिस रे बुझा होची ना पार्टिकल नेचर some phenomena like photoelectric effect and Compton effect can be explained on the basis of particle nature of light or quantum theory of radiation एका कथा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन तो आम देखिले केतरा क्षेत्र रे लाइट रो वेव नेचर जो किछि घटना होची आउ पार्टिकल नेचर जो किछि घटना होची तो ओवरऑल वी कैन से लाइट रो की नेचर अछि डुअल नेचर हेंस लाइट शोज द डुअल नेचर दैट मींस thus light has dual nature, that is it sometimes behaves as wave and sometimes as particle. It sometimes behaves as wave and sometimes as particle. बेले बेले वेव बड़ा बिहेव करे तो बेले बेले पार्टिकल बड़ा बिहेव करे से कह जाए डुअल नेचर बट आम टॉपिक रे ना कौन अच्छी चैप्टर ना कौन अच्छी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर तो एटा में देखिले रेडिएशन डुअल नेचर कौन देखिले मैटर केमती डुअल नेचर हम एटी क्या आइले ना डी ब्रोगलाई आसीले क्या आसले डी ब्रोगलाई हला चैप्टर ना कौन अच्छी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एबे हमें देखिले रेडिएशन डुअल नेचर तापर देखिया मैटर रे केमते डुअल नेचर अछि एटा क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन होछि लेख what consideration lead de Broglie to suggest that material particle can also have wave property. Material particle can also have wave property. Okay, it's a very important theoretical question. जेहेतु चैप्टर ना हो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर रेडिएशन तो डुअल नेचर अच्छे देखिले बट मटेरियल पर्टिकुलर केमती डुअल नेचर अच्छी कौन पाई कौन भाबिकी डी ब्रोगले सजेस्ट कले ताहा ऊपर आधार को कथा भाबिकी से कहले जे मटेरियल पर्टिकुलर डुअल नेचर थिबो ओके तमाने पार्टिकल तो इटसेल्फ इज ए पार्टिकल आ तो एक्स्ट्रा कौन थिबो वेव नेचर कौन थिबो वेव नेचर बा ताकू एमती भी क्वेश्चन आस जाय पारे व्हाट आर डी ब्रोगलाई वेव or matter wave what do you mean by de Broglie wave or matter wave एक इधर क्वेश्चन माने एक matter wave
आंसर होची डिब्रोग्लाई कहले जे नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। आउ ये नेचर रो यदि दिरा बेसिक क्वांटिटी बा एंटिटी देखा जाए माने बेसिक कोटा जो दुनिया सृष्टि गोटे हला मैटर गोटे हला एनर्जी। टू बेसिक फिजिकल एंटिटी आर मैटर एंड एनर्जी। इफ एनर्जी shows the dual nature so should the matter। यदि एनर्जी टा डुअल नेचर देखे दोची तो मैटर भी डुअल नेचर देखे। बुझिला से कहले डी ब्रोग्लाई reasoned that माने से एइति पई एत फीलिंग करी कतरा कहले reasoned that nature loves symmetry, nature loves symmetry। So hence to basic physical entity नेचर रे तेरा बेसिक एंटिटी किए गोटे मैटर आ गोटे एनर्जी। हेंस टू बेसिक फिजिकल एंटिटी मैटर एंड एनर्जी also show symmetry। As energy shows एटी एनर्जी माने रेडिएशन लाइट। एटी एनर्जी कहा को बुझुची लाइट को बस रेडिएशन को। As energy shows dual nature so should matter, so should matter। that means जेहेतु एनर्जी रा डुअल नेचर देखौची तो मैटर टा भी डुअल नेचर देखौची हला। so material particles like electron, proton and neutron etc. So wave nature when in motion जदि रेस्ट थिबे से बिहेव कले पार्टिकल भलिया बट जदि मूव करूथिबे से माने को नेचर देखेबे वेव नेचर देखेबे। सेति पाई मने पकाओ बोर पोस्टुलेट रे जदा गोटे कांसेप्ट थिला गोटे पोस्टुलेट थिला L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। एटा को मैं प्रूव करैतिले एई कांसेप्ट को नै किना ऑर्बिट ऑर्बिट एतला इलेक्ट्रॉन मूव करे गोटे वेव एसोसिएट हो जाए मने पड़ुची कहीं कले ना यही नेचर कन्फर्म जे प्रमाण कराइला ना तो से कहले जेहेतु एनर्जी टा डुअल नेचर देखौची एटी एनर्जी इन द सेंस लाइट तो मटेरियल पार्टिकल भी डुअल नेचर देखेबो। केमित देखौची ना मटेरियल पार्टिकल को माने तू नुहे मु नुहे आमे नुहे बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ए माने जदि रेस्ट थिबे सिंपली पार्टिकल वाला बिहेव करेंगे तो मूव कर जी रैंडम मोशन को पड़े आसवे समहाउ सेठी वेव एसोसिएट हो जाए सेटा को कहा जाए डी ब्रोग्लाई वेव की वेव और मैटर वेव। ओके सो मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटसेट्रा सो द वेव नेचर व्हेन इन मोशन। ओके दिस वेव is called de Broglie wave or matter wave।
जदि वेव अच्छी तेन वेवलेंथ थी सेठी जो वेवलेंथ था कह जाए डी ब्रोगली वेवलेंथ the wavelength of this wave माने डी ब्रोगली wave is called डी ब्रोगली वेवलेंथ कौन कहा जाए ना डी ब्रोगली वेवलेंथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निभुची नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखे अच्छी डिराइव द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर ए मटेरियल पार्टिकल डिराइव डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर ए material particle. Very important question. Derive de Broglie wave equation for a material particle. If E is equal to energy of an incident जो लाइट टा पड़े मैंने कौन पड़े फोटोन पड़े तार एनर्जी रख जो तमें ई नबा देन ई इज इक्वल टू एच न्यू हम नहीं इक्वल टू एच न्यू यार न्यू किए रहे ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन frequency of radiation or photon according to let this be equation 1 okay according to Einstein's mass energy relationship you know your E equal to mc square हम देखले E इक्वल टू एच न्यू एट देखले E इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो LHS समान अच्छी ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get h nu is equal to mc square or again we can say hc by lambda because nu is equal to c by lambda is equal to mc square गोटे c कटिले केता आसीबो h by lambda equal to mc बट आमर दरकार कहार एक्सप्रेशन लैम्बडा रो वेवलेंथ रो दैट मींस लैम्बडा इज इक्वल टू h by mc this is for photon this is the de Broglie wave equation de Broglie wave equation this is for photon but यदि photon बदल आउ कई थांती इलेक्ट्रॉन थिबो photon बदल की अछि इलेक्ट्रॉन जार की मास थिबो photon तो रेस्ट मास न थाय ना तो से लाइट रो स्पीड रे मूव करे इसमें c for any other material particle for any other material particle से इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन पाई लैम्बडा इज इक्वल केते हिजबो h by
mv और h by p, h by mv और h by p, बिकॉज इलेक्ट्रॉन केवल लाइटर स्पीड रे मूव करिवो ना mv. दिस इज de Broglie wave equation for a material particle, for a material particle. अब यही इक्वेशन टा ही बेटर एक्सप्लेन करे द डुअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल. यही इक्वेशन टा आहरी भल भाव बुझे पारुची जे पार्टिकल डुअल नेचर अच्छी कहीं ना पार्टिकल रो मोमेंटम थाए, वेवलेंथ थाए वेव रो. आज वेवलेंथ और मोमेंटम रिलेट हो जाती ताने कौन आम बुझा तार वेव नेचर भी रोचे पार्टिकल नेचर रोचे. बुझी पारछ ना कथा किसी कहली. दिस इक्वेशन এইটা কোন নামে ডি ব্রগলাই ওয়েভ ইকুয়েশন. দিস ইকুয়েশন better explain the wave nature of matter because it relates lambda with p. ये मोमेंटम और वेवलेंथ को रिलेट कर दो. मोमेंटम गोटे पार्टिकल था, वेवलेंथ गोटे वेव था. तो हम कन्फर्म हो गले हाँ मैटर रो डुअल नेचर अच्छे. ओके इट्स ए क्वेश्चन. एटा कौन कौन क्वेश्चन रहा ना डी ब्रोगलाई वेव इक्वेशन. तापर आउट क्वेश्चन देख. क्वेश्चन इज दैट सो दैट क्वेश्चन है सो दैट द de Broglie wavelength lambda of electrons of energy E is given by the relation lambda is equal to h by root over of 2me. h by root over of 2me. It's a very important relation. हमको प्रूव करियर अच्छे. लैम्बडा ला वेवलेंथ, h ला प्लांक्स कांस्टेंट, 2 तो 2, m is the mass of electron, E is the energy of the electron. Is the how could you derive this? If E is equal to kinetic energy of electron, E equal to kinetic energy of electron, then E is equal to what? Half mv square. E equal to half mv square, or V is equal to 2E by m root over. V square is equal to 2E by m, or V is equal to root over of 2E by m. Yes or no? As lambda is equal to h by mv. h by mv. That means we can say h को h रहू, m को m रहू, v जगह पड़ेला, v जगह दिस वन 2E by m. Okay,
जिते एम टा रूट ओवर भितर को पशिब कौन हो स्क्वायर हो तो 2m स्क्वायर e by m गोटे m कटि जीवनी तो फाइनली वी कैन हैव द डिजायर्ड रिलेशन विल बी देयर लैम्बडा इज इक्वल टू h by रूट ओवर ऑफ 2me या ऊपर हम प्रॉब्लम करिया ए पे ओके केमतला बुझिला ना दैट्स ऑल लास्ट क्वेश्चन आ गोटे आज पे क्वेश्चन अच्छी accelerated through a potential difference of a v volt can be given by lambda equal to h by root over of 2mev or that is equal to nearly equal to 12.3 by root over of v angstrom. Root over v angstrom. It's an important question. एटा को केतरा जगह लिखा है 12.27 12.27 नियर इक्वल टू 12.3 आओ हला एटी बुझ भल से लैम्बडा हला वेवलेंथ h हला प्लांक्स कांस्टेंट 2 तो 2 m हला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन v हला पोटेंशियल डिफरेंस एटी v वेलोसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस हला केम शो करबा सही इजीली e is equal to हाफ एम बी स्क्वायर और v इज इक्वल टू 2e बाय m रूट ओवर ठीक अच्छे देख टी e इज इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर एटा किए ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मींस v इज इक्वल टू 2e बाय m रूट ओवर एज w इज इक्वल टू qv गोटे कांसेप्ट w वाला वर्क डन q वाला चार्ज v वाला पोटेंशियल डिफरेंस सही कांसेप्ट लिखि परिबा e इज इक्वल टू ev here E is equal to energy on electron, energy, or we can say this energy is the work done because work done and energy are same thing. E is equal to work done on electron. Then here we can say V equal to देखो V equal to रूट ओवर को रूट ओवर रहिला 2e by m ए e जगह पड़ जो ev by m ए v टा वेलोसिटी बट ए v टा ला पोटेंशियल डिफरेंस गोटे बड़ करके लिख दियो एटा वेलोसिटी एटा पोटेंशियल डिफरेंस अगेन as lambda is equal to h by mv that means lambda is equal to h को h रहिला m को m रहिला ए v जगह एटा पड़ गला 2ev by m again we can say lambda is equal to h by root over of ए m टा भीतर को स्क्वायर हे जीवो that means गोटे m कटि जीवो 2mev हमें जानी जे समस्त वैल्यू अच्छी केवल वेरिएबल किए रे कह पार दैट मीन्स हियर लैम्बडा इज इक्वल टू एच रे वैल्यू केते नियरली इक्वल टू 6.63 into 10 to the power minus 34 by 2 root over of 2 को 2 रहिला मास रे वैल्यू तुम जानि छ इलेक्ट्रॉन मास दैट वन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ठीक अछि 31 kg E वैल्यू कितना जीव 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम into v डाला वेरिएबल ये समस्त को सॉल्व कर देना जीव नियरली इक्वल टू वैल्यू पकेला पर नियरली इक्वल टू 12.3 by root over of v टा वेरिएबल रहिला angstrom. Okay, this is the expression lambda is equal to
12.3 by root over of v angstrom where v is the potential difference। आज आप ये था पे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करियो। ओके बाय।